ओके, अब सही है सब? यस सर। चलो ठीक। Yes. ओके ओके गुड। So basically, I was talking that yesterday I gave you a homework, right? Many students have solved that and sent me back. So यस सर। before starting the reciprocal lattice, I just want to discuss that question. The basic fundamental plane for the FCC lattice, they were asking about. Okay, so if any student are facing problem, the problem will be basically will be on what should be the plane if anyone is facing problem. सर पहले से थोड़ा बता दीजिए ना, स्टार्टिंग से क्या बोल रहे थे। स्टार्टिंग से ही मैं बोल रहा हूँ। ओके ओके कल सर। मैंने एक न्यूमेरिकल दिया था आप लोगों को। हाँ सर। ओके, क्या था वो न्यूमेरिकल? एक मिनट। सर गेट का क्वेश्चन था सर। Can you read, sir? Yes, the lattice constant of a unit cell, the lattice constant of a unit cell of sodium chloride crystal is 0.563 nanometer. यही था? यस हाँ सर। sir. Okay, so lattice constant was given, that is A was given at 0.563 nanometer, right? And X-ray of wavelength 0.141 nanometer. The wavelength of X-ray was given 0.141 nanometer, right? Are diffracted by this crystal, okay, the angle at which the first order maxima occurs. Okay, basically the crystal is NaCl and they are asking for the first order maxima, that is n should be equal to 1, right? I am using the Bragg's equation, that is 2d sine theta is equals to n lambda, converted d in terms of interplane, lattice constant, that will be 2a sine theta upon root under h square plus k square plus L square is equals to lambda, right? So the sine theta will be lambda upon 2a and it will be root of under h square plus k square plus L square. Okay, this is our final expression. Lambda is given, a is also given. So but the main issue is what will be the value of HKL? Okay, what will be the value of HKL? See, first order diffraction maxima means we have to find the very fundamental plane. What should be the first plane for this NaCl crystal? ठीक है ना? क्योंकि भाई आपको यहाँ पर you have to take this value, this under root h square plus k square plus L square value. You have to take this like that, that this should be the minimum. ये कैसा हो? एकदम मिनिमम होना चाहिए. मैक्सिमम तो आप कुछ भी ले सकते हो, कैसा भी आप प्लेन बनाओगे मैक्सिमम वैल्यू आप मिल जाएगी, बट फंडामेंटल के लिए यू हैव टू टेक दिस मिनिमम. ओके, सो हाउ कैन यू टेक दिस एज अ मिनिमम? इसको आप कैसे मिनिमम ले सकते हो? व्हाट आर द कंडीशन ऑफ NaCl? दिस फॉलो द सेम रूल एज ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक FCC. ओके, so either all should be even or all should be odd. Okay, so 0 0 1, can this be possible? No, 0 0 1 cannot be possible. Okay, because this is a mixed state. 0 0 1 cannot be possible. So our next candidate is either 0 0 2 or 1 1 1. इन्हीं दोनों में से कोई होना चाहिए, right? If you are taking 0 0 2, you are getting this complete term value as 2. You will take 0 0 and 2 square is 2. Okay, and when you are taking 1 1 1, you are getting this value as 1.732. That means which is shorter? 1 1 1 is shorter. So basically we will take HKL as 1 1 1. Clear है सबको? You will put the value of lambda here, value of lattice constant here, value of HKL here, and you will get the theta. Okay? सर Yes. सर ऑल इवन में तो 0 0 0 भी तो आएगा ना, 0 तो 0 वो क्यों नहीं लेते? 0 0 का कोई प्लेन होता है आपका?
0 No 0 sir, or even. या फिर Yes sir. 0 0 पे आप कैसे कोई प्लेन बनाओगे? 0 0 0 का मतलब होगा प्लेन ही नहीं है, राइट? Okay sir. क्लियर है Thank you सबको? sir. क्लियर है एवरीवन? सर यस। सर ये फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए, मैंने अभी ज्वाइन किया। 111 क्यों लिया है? Basically I am saying that we have to consider this value as a minimum. Okay, आपको ये वैल्यू मिनिमम लेनी है because he is asking for the first order diffraction maxima. So when you plot, one more thing I am telling you guys, when you plot the diffraction spectra, this plot is between intensity I and 2 theta. ये इन दोनों के बीच का प्लॉट होता है, intensity I and 2 theta. The theta will be minimum. At the minimum theta you will get the first order maxima. आप खुद देख रहे हो ना, यहाँ पे थीटा जितना छोटा होगा आपको यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा मिलेगा मिनिमम थीटा पे। ओके, उसके बाद बाकी सारे पीक्स मिलते जाएंगे। कुछ ऐसा स्पेक्ट्रा होता है XRD का। So for the first order diffraction maxima the angle should be minimum, that is theta should be minimum. So from this expression tell me when the sin theta will be minimum, when this term will be minimum, under root h square plus k square plus l square. यहाँ तक clear है? यस सर। Okay, now I am saying the crystal is sodium chloride and sodium chloride follow the rule as per the FCC. And what are the rule on the FCC? Either should all be even or should all be odd. या तो सारे even होने चाहिए या तो सब odd होने चाहिए. So what are the most probable candidate? Either it will be 111 or it will be 002. Okay, so if you are taking 002, this factor comes out to be 2, and when you will take 111, this factor will comes out to be 1.732. So which is minimum? It is coming out to minimum for 111 plane. Okay, so the HKL value will be 111, and the angle you will get theta will be approximately 12.5 degree. Okay, so answer will be around यस सर। 12.5 ओके degree. Clear है सबको? किसी को कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? क्लियर है सर। Okay, आगे बढ़ते हैं. Now we are going to start the reciprocal lattice. So before starting, what you guys know about the reciprocal lattice? Can anyone tell if you know something? Reciprocal That lattice. basically it's a state of all vectors. हाँ. यहाँ पे say that is the plane wave with periodicity of a given graphite lattice is known as reciprocal lattice, where the form will be exponential of k into small r plus capital R equal to 1. Okay. Okay. It is lattice in Fourier space. Yes, it is. It is. It is. Before discussing the reciprocal lattice, I just want to do some comparative study. Okay? देखना, ध्यान से सुनना. Mathematics सबको आती है, कराऊंगा मैं, यहाँ भी कराऊंगा. I will solve all the mathematics here, but mathematics is quite easy. Mathematics में कुछ नहीं करना है. Dot product, cross product, that's it. But basically, you have to understand what the reciprocal space is, what is the reciprocal lattice, and very fundamental question, why we use reciprocal lattice. What was the main basic problem in the real lattice? भाई हम किसी चीज की स्टडी क्यों करते हैं? हम आउट ऑफ द वे जाके क्यों सोचते हैं? बिकॉज हम जहां पर हैं एट दैट प्लेस वी आर फेसिंग सम इशू, वहां पर हमें कोई प्रॉब्लम हो रही है, राइट? सो इसके बारे में पहले बात करते हैं. सो डायरेक्ट लैटिस एंड द रेसिप्रोकल लैटिस. See, everyone knows about the direct lattice, right? Direct lattice means which we were discussing till this date. अभी तक हम जितनी भी discussion किए हैं, like we were discuss about the simple cubic, okay? We were discuss about the simple cubic lattice, body-centered cubic lattice. All the discussion we have done here, this is for the direct lattice. Direct lattice also named as the real lattice. Okay, this is also named as real lattice.
ओके, तो इसके बारे में हमें सब कुछ पता है. वी नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द रियल लैटिस. नाउ comes to the reciprocal lattice. First thing I want to give you answer that why we need reciprocal space and why we need the reciprocal lattice. सबसे पहले तो इसके बारे में बात करते हैं कि हमें जरूरत क्या है इसकी. Why we need this reciprocal lattice. Okay, so for understanding this concept, I want to make a I want to make a cube here first of all. Please draw everyone with me. Okay, I am making a डायरेक्ट लैटिस के लिए करना है ना? no. I am telling you the answer that why we are using the reciprocal lattice. I am writing down the question here also. डायरेक्ट लैटिस का कोई डिस्कशन नहीं. डायरेक्ट लैटिस का डिस्कशन हम कर चुके हैं, उसके बारे में कुछ बात नहीं करनी है. ओके, बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द रेसिप्रोकल लैटिस. सो द क्वेश्चन इज व्हाई reciprocal lattice is important. Why reciprocal lattice is important? भाई ऐसा क्या सर है? यस सर अभी हम ये डिस्कशन चालू करें ना, वो 2 मिनट के लिए हमारा ब्रेक हो गया था नेटवर्क की वजह से. जस्ट अभी शुरुआत किया है. The main ओके सर. fundamental question is why we are using the reciprocal lattice concept. नेट स्लो हो रहा है. Okay, किसका नेट स्लो हो रहा है? मेरी तरफ से? नहीं सर हमारा. ओके सर ओके. सो आप लोग ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है ना? सर पूरा वीडियो What happened? सब ठीक है? मेरे साइड से तो सब ठीक है. स्लो हो रहा है. ठीक है, आप एक बार देख लो अपना नेटवर्क, हो सकता है आपकी वजह से इशू हो थोड़ा. ओके, आई हैव मेक अ क्यूब हियर. लेट्स सपोज दिस इज आवर ओरिजिन. ठीक है, दिस इज आवर प्लेन एंड दिस इज ऑल्सो आवर प्लेन. ठीक है, एक कोई हमारा एक ये प्लेन है एंड द अदर प्लेन इज दिस. What will the Miller? Let's suppose this is y-axis, this is x, and this is z. So, can you tell what are the Miller indices of this plane? 0, 1, 0? Yes, sir. 0, 1, 0? Now, let's suppose this is origin. So, what will be this distance? This plane to plane distance. This value will be d, the interplanar spacing. Yes, sir. Okay. Now, okay, fine. I just want to ask you, if I draw a one more plane here, if I draw one more plane here, okay, like this, and let's suppose this distance a d, that is, it should be, what is the value of d here? That is a lattice constant. Let's suppose from this point, okay, let's suppose the origin is here. From this point, at a distance 3a by 4, at a distance 3a by 4, I have one more plane. यहाँ पर हमारा एक और plane है. Okay, what will be the indices of this plane? It will be 0, 4, 0. सर ये प्लेन पैरेलल है जो आपने सारे वीडियो प्लेन, में हाँ, बनाया. सभी पैरेलल हैं. ये तीनों पैरेलल प्लेन्स हैं. All are ओके the सर. parallel planes. ठीक है. Okay. Now 3 by 4 distance पे हमने एक plane बनाया. Now again we are making a plane here at a distance. Let's suppose at a distance a by 2. At a distance a by 2. यहां पर आप एक पैटर्न देख रहे हो. Are you guys able to see a pattern here? That as we means decreasing the value of d, or you can say as we want to analyze the farther plane, हमारे से जो दूसरा दूर एक प्लेन है, अगर हम उसको एनालाइज करना चाह रहे हैं तो वहां पे क्या हो रहा है? द इंटरप्लेनर स्पेसिंग इज गेटिंग रिड्यूस्ड. डी की वैल्यू घटती जा रही है. ओके,
आप यहां से भी देख सकते हो, दिस इज अ d, correspondingly this value also, let's suppose this will be d by 2 or something. Similarly this will also reduce. तो हो क्या रहा है यहाँ पे, जैसे जैसे हम प्लेन्स को स्टडी करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, इंटरप्लेनर स्पेसिंग क्या होती जा रही है, घटती जा रही है. द इंटरप्लेनर स्पेसिंग गेटिंग decreased as we go for the some higher planes. क्लियर है इतनी सी बात, यहां तक क्लियर है सबको? जी सर। ओके. मतलब Yes, sir. सर मतलब ये लास्ट स्टेटमेंट प्लीज एक बार बताएंगे, अभी जो आई एम सेइंग सुन नहीं पाए. I am saying this was our first plane. Okay, that was a Yes, distance sir. d. I had Yes. made another plane at a distance d by 2. I had made another plane at a distance, let's suppose d by 4. Then I have made another Okay. plane at a distance d by 8. I am saying, Okay. are you guys able to see a pattern here that if we want to analyze the plane which is closer to each other, the interplanar spacing getting reduced. Interplanar spacing क्या हो रही है, घटती जा रही है. ठीक है. Okay. एक sir. पॉइंट ऐसा होगा, there will be a point where all these planes will be so close to each other, एक दूसरे के बहुत ज्यादा पास में होंगे, and it will be very difficult to visualize or analyze these planes. ये मैं रियल स्पेस लैटिस की बात कर रहा हूं, ये भी रियल स्पेस लैटिस की बात हो रही है कि एक्चुअली हो क्या रहा है. ठीक है ना, ये भी रियल स्पेस लैटिस की बात हो रही है कि रियल स्पेस में ऐसा प्रॉब्लम क्या आ रहा है जिसकी वजह से हमें reciprocal lattice की जरूरत पड़ रही है. Okay, I am saying solving this is actually all about the real space, and I am saying that what are the basically the problem in the real space we are getting, so that we need the reciprocal space or reciprocal lattice. So the basic problem is, for the higher order plane we are not able to visualize that plane. हम उस plane को visualize नहीं कर पा रहे. Where? In real lattice. In real lattice or real space. Okay, क्लियर है यहां पर सबको? आपको दिख भी रहा होगा, जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो ना, as you are heading the forward, planes का visualization, planes को देखना बहुत ही ज्यादा क्लमजी हो रहा है, बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है यहाँ पे. Okay, so for this, for the resolving this problem, see, the fundamental basic aim of the XRD is what? The fundamental aim of getting the means plane is what? To study the crystal, right? To study the crystal. How we will study the crystal? For studying the crystal, I told you, first we have to get the Miller indices or the integer or the coordinate of the planes. Clear है भाई? जब तक हमें planes के indices नहीं पता होंगे, तब तक हम crystal की study कैसे करेंगे? Clear? But एक बहुत बड़ा problem आ गया in the real space. There's a big problem in real space, that for which we have made all these stuff to study the planes, that planes getting clumsy as the interplanar spacing getting reduced. To resolving this problem, we need the reciprocal space. We need the reciprocal space. Okay? अब reciprocal space में ये कैसे work करेगा? How it will work in a reciprocal space? What we are going to do? And basically, what are the basic fundamental things in the reciprocal space? Okay, acha, any student has take the name of Fourier transform. Yes, exactly, it is the Fourier transform. भाई Fourier transform सबने पढ़ा है, I hope. यस सर। कोई ऐसा है जिसने Fourier transform नहीं पढ़ा है अभी? Okay, so what you basically do in a Fourier transform? You just transform the position space to the momentum space. भाई अब यही तो करते हो ना? You just transform Yes. the position space to the momentum space, right? जैसे कि if you talk about expression, I'm telling you, देखना अभी आपको इस कॉन्सेप्ट से ना क्लियर हो जाएगा. ठीक है ना, यहां से क्लियर होगा. Let's suppose we have a function f of t here, f of t, and the function is 1 upon
t square plus a square. 1 upon t square plus a square. What is the sketch of this function? The sketch of this function will be like that. कुछ ऐसा होगा, ओके कुछ ऐसा स्पेस होगा. When you take the Fourier transform of this function, that is g of omega, Fourier transform करके आप देख लेना, मैं Fourier transform नहीं कर रहा हूं. When you get the Fourier transform of this function, you get pi upon a e to the power minus a mod of omega. यही मिलता है आपको. एंड इसका स्केच कैसा होता है, किसी को पता है? दिस फंक्शन इज स्केच लाइक दिस. ये कुछ ऐसा होता है. सी, यहां पर आपको आंसर मिल रहा है that why we are shifting to the reciprocal lattice from the real lattice. This is the story of real lattice. This is the story of reciprocal lattice. Or you can say the reciprocal means what? Position space to momentum space. You can say this is the story of reciprocal. Just analyze this plot. Just you are heading toward the positive terminal, it is getting broader, broader and to the infinity. See, यहां पर आप इसको एनालाइज करो. जो पोर्शन यहां पर ब्रॉडर है, वो पोर्शन यहां पर कैसा है? नैरोवर है. जैसे जैसा पोर्शन रियल स्पेस में ब्रॉडर हो रहा है, वैसा वैसा पोजीशन यहां पर क्या हो रहा है रेसिप्रोकल स्पेस में? नैरो होता जा रहा है. बात समझ पा रहे हो आप लोग? वैसा वैसा ये क्या हो रहा है? ये नैरो होता जा रहा है. So to study this type of plot is quite easy as comparison to this. Okay, or you can say directly one thing, that the thing which will means expand in a real space, that will compress in a reciprocal space. बात समझ में आ रही है? That will compress in a reciprocal space. Like I told you about the intensity and angle graph. Intensity and 2 theta plot. Basically, this is what we get in the X-ray diffraction. Okay. Tell me, if I do this in a real space, what you will get? You will get something like this. भाई यही तो होता है ना इंटरफेरेंस मैक्सिमा पैटर्न, आपको याद है? इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन मैक्सिमा ऐसे ही तो मिलता है ना आपको, कहीं कम कहीं ज्यादा ऐसे मिलेगा. ओके. अगर हम इसको रियल स्पेस में स्टडी करें, इफ यू स्टडी दिस इन द रियल स्पेस, यू आर गेटिंग कर्व लाइक दिस, द ब्रॉडर कर्व. And to study this broader curve is quite difficult. Or you can say it will give you a false result. ये आपको एक false result दे सकता है. अगर study ठीक से नहीं हुई तो ये आपको एक false result दे सकता है. But similar thing, if you do in a reciprocal space, this means the width, the broader space is decreased to the narrow space like this. ये कुछ ऐसा convert हो जाता है. Okay, this is for real space, and this is in the, you can say, reciprocal space. ये कुछ यूं हो जाता है जैसा भी मैंने बनाया था. If anyone has saw the pattern of XRD, उसको पता होगा that this is the pattern of XRD. Actually जो हमें XRD दिखता है किसी मटेरियल का ना, वो कुछ ऐसा पैटर्न दिखता है. ये नहीं दिखता कभी. If anyone has saw that, मेरे पास है स्केच, मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप देखना. कुछ ऐसा पैटर्न हमें दिखता है. So basically this narrower function, इस पीक को एनालाइज करना काफी इजी होता है. Okay, this is quite easy to analyze, to study this data as comparison to this data. Okay, so all the fundamental thing is why we are doing the study of reciprocal lattice, because ultimate aim is to study the crystal, right? For studying the crystal, we have to know exactly the position of what? Planes. But in real space, we are not able to get the exact location of the planes. क्योंकि जैसे हमने देखा, जैसे ही planes हमारे पास आता जा रहा है ना, interplane spacing get reduced.
और आप खुद सोचो, when the interplane spacing will get reduced, how will you distinguish, okay, this is a 100 plane, or this is a 101 plane, or this is a 212 plane? How will you distinguish? This will be a complete destruction. आप ये नहीं कर पाओगे. So that's why the scientist has made the concept of reciprocal lattice. And one more thing, this is the reciprocal lattice concept is just fictitious. ये imaginary है, ऐसा होता नहीं है, बात समझना ध्यान से. It's just a tool. It's just a tool which we have made by ourselves. जी हमने ही बनाया है for the study of our complicated structures. ऐसा नहीं है, if you see the crystal, you can say, okay, this is a reciprocal lattice, this is a real lattice. No. This is completely mathematical concept, or you can say this is a concept made by the ourselves. हमने इसको बनाया है so that we can visualize or analyze the things properly. Clear है? Yes, sir. Everyone is clear why basically we are studying the reciprocal lattice? क्या इसका use है? यस सर. सर एक बार ये जो आपने जी ओमेगा लिखा है ना, इसको बता दीजिए. और ये मतलब सिर्फ एक्सप्रेशन पाई, ये सर इधर साइड जहाँ पे आपने फूरियर ट्रांसफॉर्म This is किया a, था इसका. ये मैंने एग्जांपल दिया है that if you are taking the function नहीं ft सर, पाई अपॉन ए लिखा क्या हुआ है ना, ये एक बार बता okay, दीजिए. this one. This is a g of omega pi upon a e to the power minus a mod omega. अच्छा सर, माइनस है वो. ओके हाँ, सर. ओके. ओके, आप इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल के देखना, यही आएगा. ओके. हाँ सर, वो भी थोड़ा प्रैक्टिस करना रहता है हमें फूरियर ट्रांसफॉर्म का. No issue. So basically I want to tell you that in the real space you are getting this broader portion, एक broader curve आपको मिल रहा है. But if you are taking a Fourier transform, you are getting this narrower portion. It's a very beautiful and very means you cannot imagine कि ये concept आने के बाद हर एक sector में, not in the means अपनी study में नहीं, हर एक sector में, like in the medicals. मेडिकल्स में जो आप ईसीजी देखते हो, ईसीजी पैटर्न किसी ने देखा है? ईसीजी का पैटर्न हाँ सर, ग्रीन वाला सर. क्या होता है डाउन उसमें? पीक रहते. उसमें कैसा होता है? कुछ ऐसा पीक नहीं रहता है, कुछ ऐसा पीक नहीं रहता है. हाँ सर. ये सर. वो क्या होता है, वो रियल में जो हो रहा है ना वहां पे, वो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कर देता है. तो जो हमें ब्रॉडर पीक मिलेगा उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कर देता है उस पीक में, जिसकी डॉक्टर जिसको एनालाइज करता है. इन द मैनी सेक्टर सिग्नल्स को देखना, मतलब बेसिकली ईसीजी इज व्हाट? ईसीजी इज अ सिग्नल ना, जो हार्ट का सिग्नल है वही तो वो बताता है ना, कि किस टाइम पे पंप किया, किस टाइम पे नहीं पंप किया, कैसा, यही सब तो बताना है ईसीजी. So this is a very beautiful concept. Okay, so this is basically the discussion why we study the reciprocal lattice. Clear है सबको? Everyone, आगे बढ़े. यस सर. किसी को कोई डाउट हो पूछ सकता है, किसी को कोई डाउट हो पूछ सकता है अभी. सर जैसे अभी आपने हाँ, कि जो रेसिप्रोकल लैटिस है वो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है. yes. सर जो हम रियल लैटिस पढ़ रहे हैं, मतलब वो भी तो एक हमारा कॉन्सेप्ट ही है ना, कि वो रियल में एग्जिस्ट करते हैं. इस वही तरीके से रियल है, वही रियल है, बट हमने उसकी स्टडी कैसे की है? हाउ वी नो दैट दिस इज 010 plane? हाउ वी नो दिस इज 010 plane? Basically what we are doing here, we are just studying or just repeating the things which has been found earlier. जो पहले आ चुका है, जो पहले इन्वेंट हो चुका है, डिस्क्राइब हो चुका है, हम उसको पढ़ रहे हैं. ओके, हम उसको पढ़ रहे हैं. तो जैसे कि हमने सिंपल क्यूबिक पढ़ा, लाइक वी स्टडी द सिंपल क्यूबिक. So we know that, okay, what I told you, that in a simple cubic, each corner contains one atom. That's it. From where this information came? कहां से आई information? कैसे पता कि कॉर्नर पे एक एटम होते हैं सिंपल क्यूबिक के? कैसे पता कि बॉडी सेंटर्ड पे एक एटम होता है बीसीसी में? कहीं से तो आया ना. That means first we have done the study, reached on some conclusions, and then we have published all the theory. Okay? Yes sir. That's why I emphasize that X-ray diffraction is very, very fundamental and very important topic of your crystallography. अगर मुझसे कोई कहे कि choose the one topic, that will be XRD diffraction. Obviously, XRD diffraction जहां पर आएगा, मतलब XRD जहां पर आएगा, वहां पर मिलर इंडिसेस तो आना ही आना है, because without मिलर इंडिसेस XRD is incomplete. Right? Clear है? आगे बढ़े. Yes. Okay. Yes sir. I hope
मैं आप लोग को समझा पाया हूँ, बिकॉज ये थोड़ा सा ऐसा टॉपिक था ना कि समझना आसान है, समझाना मुश्किल है। ठीक है, समझ में आया ना सबको? एवरीवन क्लियर? हाँ Yes, जी sir. सर, एकदम। ओके, यस सर। सो नाउ ठीक है भाई, अब हमें पता तो चल गया दैट वी ऑल नो दैट वी हैव टू गेट अ फैक्टर विच इज रेसिप्रोकल ऑफ इंटरप्लेनर स्पेसिंग। यहां तक बात क्लियर है भाई? रेसिप्रोकल स्पेस मीन व्हाट? जो डिस्टेंस है हमारा, द डिस्टेंस विच गेट क्लोजर, अगर हम कोई ऐसा फैक्टर बना ले, इफ यू आर एबल टू मेक अ सच अ फैक्टर विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, तो हमारा काम बन जाएगा भाई। अगर हम डी को इनवर्स कर दें, जो चीज घटती जा रही है अगर हम उसको बढ़ाना शुरू कर दें, as the plane यस सर। as the plane got closer to closer, the interplanar separation got closer, decreases. If I introduced some factor which shows that as we get closer to closer, and this factor is got increase to increase, हमारा काम हो जाएगा। जितना ज्यादा प्लेन जो है क्लोज आएगा, उतना ही ज्यादा हमें डिस्टेंस मिल जाएगा एनालाइज करने के लिए। ओके, so basically what we have to do, we have to find out some factor which has a dimension 1 upon d। 1 upon d का डायमेंशन का हमें एक फैक्टर लाना है। ओके, सो फॉर दिस अब यहां से थोड़ा मैथमेटिक्स स्टार्ट होगा। फिजिक्स हो चुकी, फिजिक्स यही थी। नाउ वी विल स्टार्ट सम मैथमेटिक्स। सी, वी ऑल नो वॉल्यूम, आप किसी भी लैटिस का वॉल्यूम कैसे डिफाइन करते हो? एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू height। Okay, if you have to write the height, what you will write? Height is equal to what? If first of all I should make a cube here, यहां से आपको ज्यादा क्लियर होगा। Okay, let's suppose this is y axis, this is x axis, and this is z axis। Clear है? And let's suppose this is our first plane and this is our second plane, and this is the distance small d। यहाँ तक clear है? Okay, so what will the height? Height will be volume upon area, volume upon area। If you take the invert, means reciprocal of this height portion, that is, you can write as 1 upon height। 1 upon height is equal to what? Area upon volume, यही होगा, area upon volume। इसको 2 मिनट के लिए आप हाईलाइट करके रखो, प्लीज मेक इट अ हाईलाइट। नाउ सी हियर, लेट्स सपोज दिस इज आवर origin, okay, and in the x direction we have taken a vector, okay, in the y direction we have taken our b vector, and in the z direction we have taken our p vector। Okay, so now can anyone tell what will be the area? If I want to ask you that for the 100 plane, for the 100 plane, what will be the area? 100 plane means what? On the x axis, ठीक है ना? x axis की तरफ है। यस सर। तो इसको थोड़ा सा ऊपर से मैं रफ कर देता हूं। So if I talk, that is a, आप इसको स्टार मार्क कर लो। Now basically what we are finding? We are finding the reciprocal vectors, reciprocal lattice vectors। These are our real lattice vectors or direct lattice vectors। ABC ये तो direct lattice vector है ना real space में। Now we are going to find the some factor, some vector which is reciprocal। Reciprocal of what? Reciprocal of distance। इसका जो dimension आएगा ना, उसका dimension क्या होना चाहिए? 1 upon मीटर का 1 upon मीटर का डायमेंशन होना चाहिए। यस सर। अभी Yes, तक का sir. जो भी हमारा डिस्कशन हुआ उससे क्या क्लियर हुआ? दैट व्हाट शुड बी द डायमेंशन ऑफ दिस लैटिस वेक्टर? इट शुड बी द 1 अपॉन मीटर। ठीक है ना? तभी तो भाई जैसे जैसे आप मीटर को घटाओगे, एज यू गेट रिड्यूस द मीटर, मीटर मींस व्हाट? डिस्टेंस, इट विल गेट इंक्रीज्ड, हमारा काम बन जाएगा। ओके, सो नाउ व्हाट विल द वैल्यू ऑफ ए स्टार?
A star means 1 upon height, or you can say 1 upon d. If you talk about for the x-axis, the area will be covered what? B cross C. C. B की तरफ फिंगर करो और C की तरफ कर्ल करो, डायरेक्शन क्या मिलेगा? एक्स एक्सिस में मिलेगा? यस सर। क्लियर है ना सबको? Yes, sir. भाई B की तरफ फिंगर करो, C की तरफ कर्ल करो, you will get the x-axis direction. So basically, the A star will be what? B vector cross C vector. Clear है? This will be B vector cross C vector. And it is the area actually. What will the volume? What will the volume of this unit cell? A cube. No. In terms of ABC vector. A vector cross C. B cross C vector. A dot B cross C. A dot B cross C. You will get the volume. Yes, sir. Okay. So now what you got? You just got a relation A star, or you can say A vector star. Actually, this is also a vector, na? A star is B vector cross C vector divided by A dot B cross C. Okay. Now tell me, are you getting that the dimension of this lattice vector, reciprocal lattice vector, is 1 upon meter? Are you getting this? Yes, sir. The numerator is meter square and the denominator is meter cube. So basically this is the dimension of what? 1 upon meter. Yes, Okay. Yes. हम अपने रिजल्ट पर आ चुके हैं. We just arrived on our destination. So this is our A star. Similarly, can you tell me what will the value of B star, B star vector? So that will be A cross C. C bar cross A bar और डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा. Yes, exactly. अब क्या करना है भाई? आप सिमेट्री से देख लो ना. You will get when you take the for the means on a C like this. Put the finger, put the thumb on the y-axis, and when you will curl it down, you will get like C vector cross A vector, right? ऐसा ही होगा ना? C vector cross A vector. This will be your area. Yes, sir. And the volume will be same. Volume में थोड़ी ना change होगा. Yes, sir. Volume will be A dot B cross C. This is your B star. Now, what will the value of C vector star? A bar cross A B cross bar. C. by Cross volume. C. A vector cross B vector and divided by their volume. दिख रहा है ना? Same volume. A dot B cross C. A dot B cross C. So this is basically what our reciprocal lattice vectors. But here are a factor is missing. आप लोग को दिख रहा होगा क्या factor missing है? There is one factor. Yes. अच्छा, अब जरा इस 2 पाई के फैक्टर पे बात करते हैं. ये तक तो क्लियर हो गया कि हमने अपना मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बना लिया है. लेट्स टॉक अबाउट द 2 पाई फैक्टर. सर जो क्लास एंड होने वाली है शायद 1 मिनट में, इसमें टाइमिंग आ रहा. 1 मिनट सतीश सर, देखो आप. क्लास एंड होने वाली है क्या? ओके, सो actually there is some constraint on a time of 40 minutes because the parallel class is going on of the Atul sir on a hybrid batch. That's why the technical issue has been right. Okay, so okay, don't worry. Don't worry, from this onwards we will take class tomorrow. Okay. Okay, sir. Okay, just revise this. इसको revise कर लेना completely. बहुत important है, इसको revise कर. ओके सर. Okay. Okay, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.